Good morning to all of you. I am Surya Chandan Sahu, guest faculty in Department of Electrical Engineering, Bose, Cuttack. So, in the previous classes, we have already discussed about domestic installation and overhead line installation. So, in domestic installation, it is inside the room, and in overhead installation from substation to the final point, service point. But next our discussion is installation from service connection. So, what is service connection? Service connection is from nearest pole to the consumer point. That means service connection is taken from the nearest pole of the supplier side to the consumer at the final consumer utilization. So, in service connection we are having two types of service connection, that is one overhead, another is underground. गोटे आम पाइबा कौन overhead installation जोटा कि आमर ऊपर आसीबो and underground means आमर underground केते बेले आसीबो. For an example, जदि आमर for an example जदि आमर maximum load जदि आमर maximum load within 25 किलोवाट, जदि आमर maximum demand 25 किलोवाट तलू को आसिला below 25 किलोवाट, within means below 25 kilowatt, so we will go for overhead installation. जदि आमर 25 kilowatt तलू को total load आमर जेतिकी से installation पाई दरकार होउची जदि 25 kilowatt रु कम हैला ताहले आमे overhead installation को जिबा. किंतु जदि आमर more than 25 kilowatt, if the maximum demand is if maximum demand greater than 25 kilowatt, then we will go for underground. Then we will go for underground service connection. Then we will go for underground service connection, and what may be overhead, may be underground, we will go for some rules. That means our Indian electricity rules, number of Indian electricity rules are there. Our domestic installation पाई किछटा rule रहुची, आमर overhead transmission line पाई installation पाई की किछि rules रहुची. Also for service connection we are having mainly rule number 77 and rule number 79. आमर 77 और 79 rule जो Indian electricity rule अच्छी, that is mainly for service connection. And what I have discussed service, that is the meter board selection, that is the type of service connection. One is overhead, another is overhead service connection, another is underground service connection. And for that we are mainly using rule number 7 and rule 77 and rule number 79 for this service connection. So before that we will first know what is transmission line. Transmission line means from substation to the electrical power is first generated. आमर इलेक्ट्रिकल पावर फास्ट होची जनरेटिंग स्टेशन रे जनरेट होची, जनरेट हला परे जेतिकी आमर जनरेट होची दैट इज नॉट सफिशिएंट and we have to step up by the step up transformer. आम step up transformer रे कौन करूचु ना आग जेतिकी जनरेट मैक्सिमम आमर 11 kV जनरेट होची जनरेटिंग स्टेशन रे, सेही 11 kV को आम स्टेप अप करूचु 33 kV 66 kV 132 kV तापरे आम ताको ट्रांसमिट करूचु. जदि डायरेक्ट 11 kV को आम ट्रांसमिट करिबा बहुत गुडे लॉसेस हबो. फाइनल आमर फाइनल आमर यूटिलाइजेशन बेलू को बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो थ्रू आउट द सर्किट. सो
आमे सफिशिएंट पावर आमे पाई परिबा नाही तेणु आम कौन करिबा ना ताकू एगो स्टेप अप करिबा ट्रांसफार्मर रे आमर स्टेप अप हैला तापरे ट्रांसमिशन हैला सो ट्रांसमिशन लाइन इज द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड टू द सबस्टेशन आमर जनरेटिंग स्टेशन रू फास्ट आसिला आमर सबस्टेशन जनरेटिंग स्टेशन रू फास्ट आसिला आमर जनरेटिंग स्टेशन रू सबस्टेशन सो सबस्टेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सो फास्ट आम ट्रांसमिट करूँ सबस्टेशन को देन आसूची आमर सर्विस लाइन तापर आमर आसूची सर्विस लाइन दैट इज ओवरहेड लाइन और केबल कनेक्शन टेकन फ्रॉम द नियरेस्ट पोल सर्विस कनेक्शन होची कौन नियरेस्ट पोल टू सर्विस टू द कंज्यूमर्स प्रीमिसेस नियरेस्ट पोल टू कंज्यूमर प्रीमिसेस they are building called service line or consumer service connection service line or consumers service connection ताले केतेटा स्टेप रहिला पावर हमर यूटिलाइज हबा पई कि प्रथम हैला जनरेटिंग स्टेशन रु आसिला सबस्टेशन ताले सबस्टेशन रु आसिला फाइनल कंज्यूमर and the link between service line and the substation is your substation and consumer is the service line. So next the service connection meet at the point where the supply conductor enter the energy meter ता माने सर्विस कनेक्शन आमे कोठु पाउचे सपोज एटा हमर होउची नियरेस्ट पोल नियरेस्ट पोल रु गोटे आसिला फेज न्यूट्रल आ गोटे अर्थ दिस इज सपोज फेज न्यूट्रल दिस इज सपोज अर्थ ये आमर कोठी की आसुची दिस इज कमिंग this is coming to the energy meter amara normally 3 wire asibo nearest pole this is your nearest pole this is the consumer nearest pole to the consumer amara jo asuchi nearest pole to consumer pakku 3 wire asibo 3 wires kono 3 wires that is either 3 wires means one is phase another is neutral another is earth amar 3 wire asi pare nohole 5 wire jodi 3 phase connection jai thibo one consumer has taken 3 phase connection sethi amar asibo 5 wires 5 wires kono R Y B तीनटा फेज न्यूट्रल अर्थ दिस इज द 5 wire आमर 3 wires भी आसी पारे 5 wires भी आसी पारे सो सपोज आमर 3 wires आसिला सो फास्ट होची कोन द सर्विस कनेक्शन मीट एट द पॉइंट फॉर द सप्लाई कंडक्टर्स एंटर द एनर्जी मीटर सो फास्ट होची एनर्जी मीटर पाखकु आसुची इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू इंस्टॉल फॉर दिस वी हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाय कंडक्टर एनर्जाइज द एनर्जी मीटर सो फास्ट होची कोन सप्लाई आसिला परे प्रथमे एनर्जी मीटर होची एनर्जाइज द एनर्जी मीटर सो फास्ट होची हमरो एनर्जी मीटर को आसिला एनर्जी मीटर एनर्जाइज हला तापरे जाइकी हमरो मेन स्विच को जीवो सो दिस विल डिस्कस दैट लेटर सो
what we have discussed here, this is the 3 wires, that is here is the 3 wires, one is earth, one is phase, another is neutral. So ये सर्विस पोल रु आसिला फास्ट एनर्जी मीटर, दिस इज योर मीटर, मीन्स दिस इज योर एनर्जी मीटर, दिस इज योर एनर्जी मीटर. तापरे एनर्जी मीटर रु आमर सर्विस इक्विपमेंट जाउची, दिस इज द सर्विस 3 फेज वायर, 3 वायर्स. देन सर्विस इक्विपमेंट रु आमर दाउची प्राइमरी पैनल बोर्ड, आपको भी आमे कहि परिबा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एंड फ्रॉम दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लोड सेंटर्स. Next we will move to the next load centers. So load centers are the sub circuits. These load centers are called sub circuits. Sub circuits or branch circuits. So this is for low roof system, and this is the energy meter. What is the is called energy meter. So energy meter रे आमर रहुची main switch, आमर main रहुची, that is your main is, this is the double pole MCB. तापरे आमर होची विभिन्न ब्रांच को जाउची. सपोज गोटे को 20 एम्पियर गला, आ गोटे को 16 एम्पियर. मैक्सिमम रेटेड करंट होची से ब्रांच रे 10 एम्पियर. सो एठी हमरो 8 सब सर्किट्स आर देयर, 8 ब्रांच सर्किट्स और 8 सब सर्किट्स आर देयर. सब गुरा तमरो न्यूट्रल को लिंक हेची. दिस इज द फेज सहित कट आउट रहूची एंड न्यूट्रल लिंक. दिस इज प्रति फेज पई गोटे गोटे न्यूट्रल लिंक रहूची. हमला अर्थ लिंक भी रहूची, प्रति केस पई हमर रहूची अर्थ लिंक पई हमर रहूची 10 mm स्क्वायर कॉपर और पीवीसी केबल. तार होची स्पेसिफिकेशन, दिस इज योर 2.5 mm स्क्वायर कॉपर पीवीसी केबल इज यूज्ड फॉर अर्थ लिंक. आमर 16 mm स्क्वायर कॉपर और पीवीसी केबल यूज होची फॉर द फेज वायर. एंड दिस इज द एनर्जी मीटर को आमर आसिला सर्विस पोल रु गोटे फेज गोटे न्यूट्रल. सो एथिरे इनपुट, these two are known as input to the energy meter, and these two are output of energy meter. इनपुट टा होची तमरो सर्विस पोल सहित कनेक्टेड, एनर्जी मीटर रा आउटपुट टा टू द main switch. It is connected to the main switch. This is your energy meter output is connected to main switch. So this is your meter board description. Next, this is the meter board description. Next we will go to the service line is protected with KitKat fuse before it direct enters into the meter for protection of meter against high voltage. Amara phase wire सहित fuse is connected, KitKat fuse. By doing this, proper billing cannot be done there where the stealing of energy. जदि हमें कट आउट बा फ्यूज यूज न करिबा, हमर विद्युत चोरी जहा को कहंती, हमर इलेक्ट्रिसिटी स्टीलिंग हबार चांसेस अच्छी. फ्यूज हेले कौन, आम मैक्सिमम रेटेड करेन्ट. फॉर एन एग्जांपल, आमर जदि कट आउट यूज करिथिबा, आमर पूरा घर पाई धर 15 एम्पियर दरकार होची, आम 15 एम्पियर पाई कट आउट यूज करिबा. जदि कि आमर
आम लाइन सहित किए कनेक्टेड कला ओवरलोडिंग हम सो ओवरलोडिंग हेले आमर कटआउट विल ब्रेक anyone cannot take extra current from our energy meter so that's why cutout आमर होची सबु फेज सहित कनेक्टेड थाए so for an example this is suppose एनर्जी मीटर इनपुट आसिला फेज न्यूट्रल एटा होची आर्थिंग थिम्बल एटा तमर आर्थ वेयर आसिला अच्छा एनर्जी मीटर आउटपुट आसिला फेज न्यूट्रल आसिला ये आसिला हमर लागिला कहा सहित न्यूट्रल मेन स्विच सहित एटा आसिकी हमर लागिला ये आमर आसी लागिला मेन स्विच सहित ये आमर लागिला आसिकी मेन स्विच सहित अच्छा मेन स्विच रु आमर एटा हला न्यूट्रल लिंक एटा हला तमर कटआउट बा फ्यूज दिस इज योर कटआउट अच्छा मेन स्विच रु आसिला मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेन स्विच रु आसिला मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रे सेमती रहुची आमर सबु फेज मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रु आसिला सबुथिरे न्यूट्रल लिंक रहिला सपोज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस so 6 ब्रांचेस सबुथिरे रहिला कटआउट 1 2 3 4 5 6 cutouts are there they are directly connected to each phase wire this is your neutral link अच्छा आमर जिते बेले ये आसिला गोटे फेज सहित लागिला आ गोटे न्यूट्रल सहित लागिला सो एथिरु आमर ब्रांच सर्किट डिवाइड हबो सपोज ये गोटे ब्रांच गला गोटे फेज गोटे न्यूट्रल दिस इज सपोज सब सर्किट 1 सेमती आउ गोटे फेज वायर आउ गोटे न्यूट्रल दिस इज सब सर्किट 2 सेमती आउ गोटे गला फेज आउ गोटे न्यूट्रल सब सर्किट 3 सेमती आमर जीव आउ गोटे फेज आउ गोटे न्यूट्रल दिस इज सब सर्किट 4 नेक्स्ट 1 फेज 1 न्यूट्रल दिस इज सब सर्किट 5 नेक्स्ट फेज न्यूट्रल दिस इज सब सर्किट 6 सो आमर डिफरेंट सब सर्किट हो पार गोटे फेज गोटे न्यूट्रल दिस इज मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिस इज आवर मेन स्विच दिस इज आवर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड and sub circuit रे आसुची sub distribution board so all these are connected to HDB sub distribution board 1 this is your sub distribution board 2 this is your HDB 3 this is HDB 4 this is HDB 4 this
this is 5 and this is STB6. So सब branch circuit आमर connected है सब सब distribution board को. Next तापरे हमें कौन करिबा the service connection are either given by bare conductor from nearest pole. आमर nearest pole to either bare conductor, that is maybe से conductor को type रो conductor आसीबो. The conductor is normally AAC, that is all aluminum conductor, all aluminum conductor or SCSR, that is aluminum conductor, steel reinforced. Aluminum conductor, steel reinforced. আমরা normally SCSR नले AAC bare conductor ଆମର यूज होउची. सो ଆମର वेदर प्रूफ केबल भी आम यूज करूँ जदि आमर वर्षा दिन कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि शीत दिन आमर ठंडा कि आमर केबल को आम वेदर प्रूफ, दैट मीन्स एनी वेदर इट विल बी द वायर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी नेचुरल फेनोमेनन. सो वेदर प्रूफ एल्युमिनियम कॉपर भी आम यूज करिपरिबा. अच्छा, इन केस ऑफ बेयर कंडक्टर स्पिन और सैकल टाइप आमर जो रूम को आसी थाए, suppose this is our home. So एठी आमर जो लगी थाए आयरन चैनल, जो आयरन चैनल को आमर नियरेस्ट पोल टू आसी थाए कनेक्शन. So